हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस सीरीज। जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग पॉडकास्ट लेके। और आज हमारे साथ काफी एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर मनीषा शाह जी, जिसका मतलब हम सब ने अभी रिसेंटली आई थिंक इंडियन वुमेन्स लीग में कहानी एफसी टीम, जो एक गुजरात से एकमात्र टीम है जो रिप्रेजेंट कर रही है, और उनकी वो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट रही है। एंड अगर आप कहानी एफसी की, जिन लोगों ने अगर रिसेंटली अहमदाबाद मिरर में भी स्टोरी आई थी अगर देखा हो, तो काफी एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है। और जिस तरह से अंडर प्रिविलेज गर्ल के साथ ये पूरी एक क्लब की जर्नी रही है, तो इसको कवर करना बनता है। एंड इंडिया में भी ऐसी मतलब फुटबॉल में ऐसी स्टोरीज ढूंढना मतलब आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग हम मैम से सारी बात करेंगे कि किस तरह की उनके क्या क्या चैलेंजेस रहे, पर्टिकुलरली गुजरात जैसे स्टेट में। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो वेलकम मनीषा शाह जी मैम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you, Harry. Thank you, Curious Harry, having me, giving me this platform. It's a pleasure to be here. It's my pleasure. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नाम जब मैंने भी मतलब सुना था कहानी एफसी, तो एक इंटरेस्टिंग सा नाम है। मतलब अगर फुटबॉलिंग क्लब के हिसाब से भी सोचे तो, कि एक क्योंकि वो कहानी एक मूवी भी थी, तो वो भी एक काफी वो एक क्या बोलते हैं कि एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नाम है। तो ये कहानी एफसी रखने का मतलब इसके पीछे का क्या मतलब एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस था, या फिर किस तरह से आइडिया है? Just to give you the facts, Kahaani FC came before Kahaani movie came, so there is no हाँ correlation and there is हाँ no. Uh, well, Kahaani, I kept this name, so you can हम्म, ask me this question. And I can inspire myself हम्म, to make a kahani. हम्म, So, no, just to give you the brief about it, actually, we started a library because I'm still into the reading. And so we started a library now called Kahani Time Foundation. And then this football activity came to हम्म, existence, took a birth. हम्म, So we just continued with our library name Kahani, and then we continued with Kahani Football Club. ओके। सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कब से ये जर्नी की आपने शुरुआत की। जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी से आपने मतलब पहले आप लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड थी, वो भी अभी वो कंटिन्यू भी है। लेकिन वहां से फिर ये कहानी एफसी स्टार्ट करने का मतलब फुटबॉल में जाने का क्या कैसे मतलब लगा कि भाई हाँ एक फुटबॉल एकेडमी या फिर एक वो स्टार्ट करना चाहिए? कौन से Uh, साल से ये जर्नी शुरू हुई थी कहानी की? 2006 से शुरू हुई। ओके। uh, मैं 2004 में हांगकांग से इंडिया मूव हुई थी मेरे फैमिली के साथ। ओके। और मेरे दो बच्चे हैं अभी भी। और वो दोनों बच्चे को बहुत छोटे थे जब मैं इधर मूव हुई, 6 and 8 years old। हम्म, एंड वो लोग हांगकांग में खेलते थे। हम्म, कोई भी ऐसे, मेरा तय था कि जब वो थोड़े से चलना सीखेंगे उसके बाद 3 साल के आसपास मैं उनको टीम गेम में डालूंगी। वो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मेरे डिसाइड बच्चे था। खेलने चाहिए। हम्म, हम्म, तो उन्होंने वहाँ पे हॉकी एंड फुटबॉल मिला था, तो वो दो खेल रहे थे। फिर हम्म, उसके बाद हम लोग इंडिया शिफ्ट हो गए अहमदाबाद में। हम्म, तो मुझे लगा कि यहाँ भी हमें वो कंटिन्यू तो करना ही चाहिए। हम्म, तो मैं मैं हॉकी खेलती थी, तो मैं ओके। मेरे बेटे को लेके मेरे ग्राउंड पे गई। तो वहाँ मुझे हम्म, मेरे कोच मिल गए और उन्होंने बताया कि हम्म, ये तो अभी बहुत छोटा है, इसको अभी खिलाओगे तो वो बैंड हो जाएगा, ओके। तो अभी मत खिलाओ। तो हम्म, मैंने सोचा कि अब रुकने का तो कोई आई मीन वेट करने का कोई कारण नहीं है मेरे, हाँ हाँ हाँ। हम्म, और ज़रूरी भी नहीं है। तो हमने सोचा ठीक है, हम फुटबॉल हम्म, खेलेंगे होंगे। पर फुटबॉल के लिए भी ऐसा ही था कि हम्म, फुटबॉल स्कूल की टीम में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको 13 होना ज़रूरी है, हम्म, 1 to 13 years of age। हाँ। देन हम्म, यू कैन पार्टिसिपेट एट अंडर 13 एज कैटेगरी हम्म, टूर्नामेंट्स। उसके नीचे कोई टूर्नामेंट ही नहीं थी, और हम्म, कोई ऐसे कोचिंग भी नहीं था कि जगह वहाँ जाके हम खेल सके। हम्म, तो फिर मुझे लगा कि मैं ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब हांगकांग में थी तो मेरे बच्चे को लेकर मैं जाती थी, देखती थी, वहाँ पे बैठती थी।
तो थोड़ा कुछ समझ में आता था और स्पोर्ट्स का थोड़ा तो नॉलेज था कि एटलीस्ट वार्म अप करना चाहिए, फिर खेलना चाहिए, फिर कूल डाउन करना चाहिए। तो वो सब थोड़ा यूज करके शुरू किया था हमने, और वैसे कहानी की कहानी शुरू हुई। तो उसमें फिर ये जो आपने जो अभी अंडर प्रिविलेज गर्ल, मतलब मैंने पढ़ा है उस न्यूज में भी था कि भाई 200 से ज्यादा अराउंड 200 अंडर प्रिविलेज गर्ल के साथ आप ये एकेडमी अब रन कर रहे हो, तो उनका फिर इसके अंदर कैसे आपको वो आइडिया या फिर आपको इंस्पिरेशन मिला कि ये जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स है उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते फुटबॉल को इस तरह से, जैसे आपने बोला कि आपके बच्चों को अपने खुद ने स्टार्ट करना सही समझा, तो इसका फिर कैसे इंक्लूजन किया आपने एकेडमी में? ऐसे हुआ था कि हम जब ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे, कहानी अच्छा सा शुरू हो गया था। दिस इज अराउंड आई थिंक 2010 और 11। हम्म, तब दो चार बच्चे हमारे ग्राउंड के आसपास के एरिया में से मेरे पास आए, हम्म, और उन्होंने आके बोला कि हमें खेलना है, पर हम्म, हमारे पास कोचिंग फीस के पैसे नहीं है। अच्छा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप खेल सकते हो, आप आ हम्म, जाओ। और हम्म, हमने फिर ये सारे बच्चों को लेके संडे सुबह में एक सेशन शुरू किया। एवरी संडे मॉर्निंग वी यूज टू हैव अ सेशन, whoever cannot afford pay हम्म, the fees, they can just हम्म, come for free. हम्म, And we wanted to encourage that, so we also gave them the banana after the session. And हम्म, that small banana thing also बनाना attracted them. बच्चों And के लिए वो स्पेशल होता है, बच्चों के लिए मतलब उस एज में हाँ, एग्जैक्टली। हम्म, तो बस उस टाइम से बच्चों ने आना शुरू किया, और वहीं से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी मुझे बताया कि हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, और लेट्स ओके। try to do it with the municipal, हम्म, let's select the boys from the boys and girls from the municipal schools स्कूल्स, and ओके। train them. So that's how I got into the underprivileged kids. We started training them. हम्म, Then looking at them, um, like if I tell you about one of the, to continue this, like there was one girl named Aruna, ओके। and when she came to the ground, because we selected all these girls and boys when they were around like in fifth or fourth ओके। grade. हम्म, So when they came to the ground, like they had no clue how to wear the shoes, or how to, stand in हाँ front of the स्टैंड। coach, or हम्म, like no idea about football, nothing. हम्म, And then I see her after 3 4 years. I can see the difference in her, हम्म, that she can run her school assembly. ओके। So कॉन्फिडेंस that मतलब confidence level I saw in her, that changed her from a simple girl to a very confident person. कॉन्फिडेंस गर्ल, एग्जैक्टली। Confident girl. Same way, there is another girl named Maya Rabari. हम्म, Also, the way she is like our defender, हम्म, and the way she is also defending at home. हम्म, She's like taking care of her father passed away, and now हम्म, mother is also suffering with a similar kind of illness, हम्म, not doing very well, but she's defending her, I mean, helping her parents and mother. And same way, when she comes to the ground, she's amazing. You should see her हम्म, on the all these matches. The way she has performed is घूम रहे। unbelievable. एंड उसके बाद डेफिनेटली आपने अभी तो आई थिंक सब एज कैटेगरी में आपकी मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में अभी कहानी एफसी एकेडमी की टीम से, अंडर 13 15, मतलब सीनियर गर्ल्स तो है ही ऑब्वियसली। Yes, senior girls, we used to play all the categories, हम्म, but now our focus is more for grassroots, under 13, हम्म, and under, I mean, girls.
So that's our focus more now. But this year we'll also be doing under 13 and under 15, because now we have qualified this year for under 13 um, um, youth, चैंपियनशिप, हाँ यूथ youth लीग, league. एएफएफ की, हाँ एग्जैक्टली, We will हाँ. be playing national level tournament for under 13 age category. जब जब आपको ये कहानी एफसी एकेडमी स्टार्ट करने का आया, तब फैमिली का रिएक्शन क्या था, और इस जर्नी में मतलब फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा है, क्योंकि इट्स नॉट दी आप मतलब हम सबको पता है कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें लगा हुआ है, एंड इट्स नॉट दी यू कैन से प्रॉफिटेबल बिजनेस, और गुजरात में आप सबको पता है, मतलब पता ही है कि पहले प्रॉफिट की बात पहले होती है. तो फैमिली की ओर से मतलब एग्जैक्ट क्या रिएक्शन था इस जर्नी में, और किस तरह से सपोर्ट मिला है फैमिली का? Obviously, it started with for my two boys, so they were definitely supporting us. Actually, they were guiding me like what to do next or how to come out of whatever challenge I used to face. But yes, I could say that it's not possible for to anyone to do anything or to achieve at any level without the family's support. And obviously, because of the Bhavin's name and his reputation, we could get infrastructure, which is very important aspect for Aspect. the football. So because of Bhavin's connections and his name, we could get the infrastructure, and that's how we have achieved reached to this milestone. जब आपने ये एकेडमी स्टार्ट करी, तब मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जैसे आपने बोला कि एक काफी बड़ा मतलब इस फुटबॉलिंग में अगर आप देखें किसी को भी क्लब एकेडमी स्टार्ट करना है, तो एक वो बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सबसे पहले, और पर्टिकुलरली गुजरात जैसे स्टेट में कि जहाँ पे आपको इतनी ज्यादा फुटबॉलिंग पिच मतलब रेंट पे भी मिलना तब 2006 में अगर हम सोचे तो इतना इजी नहीं था. अभी तो काफी सारी पिचेस बन भी चुकी है और रेंट पे मिलती भी है. तो ये किस तरह के चैलेंजेस तब आए थे कि भाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, या फिर आईएफएफ के में रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीजें, इसमें किस तरह के चैलेंजेस आए थे? Infrastructure तो था ही problem, हम्म. because as you said it's a Gujarati mind, so they'll look at it कि शादी के लिए ग्राउंड दे देंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा. मिलेगा. एग्जैक्टली. और तो yes, that was a hurdle, but as I mentioned, with Bhav himself we could do that. Second thing was to find the coaches. When we started in 2006, there were no licensed coaches in Ahmedabad. So, I mean, we just have to take the player, whoever is interested in coaching, and then ask them to do the coaching. So it took me, I mean, after couple of years, I started talking to Gujarat State Football Association to organize a coaching licensing लाइसेंसेस. in Gujarat. And it took me at least, I think, to convince them, 3 years to convince them. And then the course happened in Ahmedabad. So that was another struggle. Then to bring attention of AIFF, because then there was an accreditation process. So first year when we applied for the accreditation, which was like they used to give the stars, and if you have certain requirements, if you fulfill all the requirements and achieve certain points, then you are certified. I mean, you get the accreditation from AIFF, and then you can participate in the youth league. So first year we applied, and everything got over. Nobody came to us, nobody visited us. So I called AIFF and I said, what happened? And they said, you have not applied for it. And I said, no way. And then I forwarded them email again from the past date, and then they said, oh wow, we missed out, maybe next year. So I was like, we just missed one year. So those were kind of hurdles then to organize the tournament. And from you organize the tournament for Ahmedabad, and then we organized to get the sponsorship.
So all those hurdles were there, but as I said again, for the sponsorship, we got lucky because of Bhavin's connection. We could get Syntex Industries as a sponsor, and I think we did Syntex Cup for 10 years at least. वो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेफिनेटली। अगर किसी भी क्लब एकेडमी को सर्वाइव करना है, जैसे स्पॉन्सरशिप, और आपने बोला कि थोड़ा सा वो कनेक्शन की वजह से मिल गया, नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट करंटली। अगर अभी भी आप देखिए कि आईएसएल के जो क्लब्स है वो भी अभी भी मतलब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल बन चुके हैं 10 साल होने के बावजूद भी। तो ये तो एक बड़ा हर्डल है स्पॉन्सरशिप का, कि भाई इतना ईजी आपको स्पॉन्सरशिप, पर्टिकुलरली जहाँ पे मतलब जिस स्टेट्स में फुटबॉल फर्स्ट स्पोर्ट्स नहीं है, वहाँ तो मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि कोई स्पॉन्सर आके आपको मतलब वो करे स्पॉन्सरशिप। तो वो तो एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा मैं एक जानना चाहता था कि मैंने मतलब पढ़ा आपके बारे में, कहा क्लब के बारे में, तो आपके जो कोच है, जैसे आपने बोला कि 3 साल बाद आपको वो कोचेस का मतलब वो मिले, तो आई थिंक वो अभी भी है आपकी मतलब एकेडमी में, वो कंटिन्यू है। मैं एग्जैक्ट नाम तो हाँ, उनका भूल गया। तो ये अभी जो अभी तक। गुजरात आपने जो स्टेट लीग जीती पहली बार, इस अचीवमेंट को आप कितना मतलब वो मानती है कि भाई हाँ, मतलब जब से आपने एकेडमी स्टार्ट की है तो ऑब्वियसली आपने कुछ गोल तो रखे होंगे कि हाँ हमें ये भी अचीव करना है, तो इसको आप एज ए माइलस्टोन कहाँ पे देखती है, जो गुजरात स्टेट लीग जब आपने जीती तब? See, our philosophy at Kahani is to give the opportunity to everyone to play. प्ले। So if you look at it, even in IWL, Indian हम्म। Women's League, we हम्म। are playing with, I mean, 12 girls are from Gujarat itself. itself। Okay. So I do believe that yes, we want to create the, uh, give the platform to the Gujarat players हम्म। first. हम्म। Where do I mean, yes, um, we want to get it. I mean, obviously, everybody wants to win विन। the, हाँ, and टाइटल्स। हाँ, yes, लेकिन मेन फोकस है कि भाई जो जिन बच्चों को मतलब क्या बोलते हैं कि फुटबॉल खेलने के लिए वो मतलब वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको ज्यादा कहानी एकेडमी में इंक्लूड करना, ऐसा भी नहीं है. प्लेटफॉर्म देना। हाँ, We give chances to those who are coming to the practice regularly, रेगुलरली, those who एग्जैक्टली। are committed. हम्म। Because then if somebody very good player comes in at last minute and हम्म। then you accommodate them, for those who are have played for, you know, the whole year, ईयर, though एग्जैक्टली। they came for the practice and then you don't take them, that is not also good. So that's what we try to focus on एक more. एक 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 मैं एक जानना चाहता हूँ कि आप अब जब ये आपने मतलब एकेडमी जब से स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली फिर आपने भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि फुटबॉल के ऊपर हाथ आजमाया होगा, जब मतलब मतलब Yeah, हाँ, actually, हाँ, हाउ रेगुलरली आप मतलब आप खेलती है या फिर अ, एक्चुअली मुझे, मैंने अभी 5-6 साल से शुरू किया खेलना. और अच्छा, तभी मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले खेलना शुरू करना था. कर बहुत देना बढ़िया चाहिए। गेम है. इट्स हाँ, रियल फन प्लेइंग फन। फुटबॉल. सो अभी खेल रही हूँ 6 साल से. और आपका अभी अभी आपका क्या पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग द फुटबॉल इन गुजरात? आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे जो यंगर जनरेशन आ रही है, गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, उसमें फुटबॉल के प्रति वो ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? आपका आपका क्या उसके ऊपर व्यू है? सी, अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी टूर्नामेंट्स हो रही है एग्जैक्टली, पूरे बेबी लिग्स। साल. हाँ, बेबी लीग्स भी बहुत हो रही है. 5 year side, 7 year sides, futsal, and हम्म। also the 11 year side. Now Gujarat State has started running the leagues for the हम्म। state for under 13, under 15, under 17, हम्म। and senior, and also for the girls. And गर्ल्स। that's also they are doing home and away. हम्म। So it's a really good base created by the GSFA. हम्म। So yes, football has, there are a lot of uh, it is promising in हम्म। Gujarat now that it will increase.
और उसके अलावा अभी जो करंटली ये वुमेन्स लीग चल रही है और ऑब्वियसली हमारे गुजरात के अहमदाबाद में ही चल रही है, तो इसको आप कितना बड़ा मतलब एज ए क्या बोलते हैं वो देख रही है कि एक अपॉर्चुनिटी है गुजरात के लिए कि भाई इतनी मतलब वुमेन्स की लीग पूरी गुजरात में हो रही है, और आपकी एकेडमी के लिए ये कितना बड़ा एक ओकेशन है कि भाई पहली गुजरात से टीम बनी है कि जो वुमेन्स लीग में पार्टिसिपेट कर रही है। पहली तो नहीं है ये, हम्म लास्ट ईयर भी हुआ था स्टेट हम्म लीग एंड उसके बाद IWL, पर वो हम्म गुजरात में ही नहीं हुआ था। इस बार ये हम्म गुजरात में स्पेशली अहमदाबाद में हुआ है। हम्म So it is a very good. I mean, we can see a lot of Indian players playing here in Ahmedabad. हम्म Definitely, everyone should go out and see the matches. हम्म Now the second phase, the Super League is starting. हम्म So I think then we'll be seeing a really good football. So हम्म definitely, it is a good opportunity for us हम्म to and I mean see the good football. But in terms of attracting players or the crowd for this, I see it is still not happening हम्म because we don't see anywhere anything about any boards or any advertisement about हम्म IWL in your Ahmedabad or something like that, which दैट can make a lot of impact. People can go and see. हम्म Second thing is the weather. That is also one of the. It's quite दैट्स hot right दैट्स द मेजर इशू आई थिंक, दैट्स द मेजर now. आई थिंक अहमदाबाद में अभी अभी मतलब फुटबॉल मैच करना वो भी 4 बजे, मतलब दैट्स द आई थिंक दैट्स द क्राइम मेरे हिसाब से। And also to play on a turf. It's हाँ, really it's a difficult. really challenging. It is I very think challenging. today I think it's I think 45 I think डिग्री, आई थिंक आज 45 हो गया होगा आई थिंक, पिछले कुछ I दिनों mean, से तो आई थिंक बहुत। temperature, yes, हम्म maybe in the meter it might be showing 45, but in हाँ reality, around हम्म 4 p.m., it must be on हम्म the higher side. It's on the हायर सर orange हम्म high alert. हम्म So that's another thing which is preventing the crowd going for the matches. हम्म And also, I mean, IPL is going around. गोइंग People ऑन watch it. So, yes, it's. लेकिन नेक्स्ट सीजन से एएफएफ ने बोला है कि 10 टीमों सॉरी 8 टीमों के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं लीग को एंड होम एंड अवे बेसिस पे, तो उस मूव को आप किस तरह से देख रहे हैं, और भी जो 2-3 बड़े चेंजेस अगर हम इंडियन वुमेन्स फुटबॉल के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे एएफएफ ने लिए जैसे मिनिमम वेज पे का, तो इसका एकेडमी के ऊपर कितना मतलब, क्योंकि 2-3 एकेडमी क्लब्स ने यहाँ पे वो भी बताया था कि भाई हमारे पास अभी भी फाइनेंशियली उतना बजट नहीं है कि हम इस तरह से सस्टेन कर पाए, तो इसको आप फाइनेंशियली अगर आप इंडियन फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल को अगर पर्टिकुलरली आपका क्या व्यू है कि फाइनेंशियली कितने चैलेंजेस अभी भी है एंड इसको कैसे ओवरकम करेंगे? Uh, as I think you must have heard about it. Like we are the only team because we are host team. हाँ We are not getting any financial support compared to all other 15 teams. They are getting everything from the AIFF, accommodation, transportation from ground to ट्रांसपोर्टेशन। hotel, lodging, everything. We are the only team from because we are host team. We are not getting any benefits out of तो it. मतलब ये तो कहाँ पे हुआ, मतलब होस्ट हुआ तो उसको भी तो खर्चा तो आएगा, वो थोड़ी ना मतलब वो Exactly. हम्म सो दैट्स व्हाट आई मीन कि वो भी खर्चा अभी लगता है, तो हाँ फिर देन पेइंग टू द प्लेयर्स एंड प्लेइंग होम एंड अवे, it's going to be a very challenging for clubs like ours who are into the हम्म promotion of the game more than हम्म anything else. हम्म And also, as you say, to find sponsors in Gujarat for football हम्म is a big challenge. एंड So, उसके अलावा मैंने जो पढ़ा है वो रिपोर्ट में भी पता कि एवरी ईयर जैसे आपने बताया कि 20 अराउंड 20 लाख का अभी भी वो एक वो लॉस हो रहा है, तो किस तरह से आप ये सारी चीजें मतलब मैनेज कर रही है मतलब फाइनेंशियली? 20 लाख का मतलब इट्स नॉट दी स्मॉल अमाउंट एंड स्टिल मतलब एक वो क्या है वो एक इंस्पिरेशन है क्या है आपके अंदर कि भाई अभी भी आपको मतलब है कि नहीं भाई कैसे भी करके लगे रहना है? या जब तक हो सके तो मैं तब तक मैं करूँगी।
हम्म, ये मेरा है, क्योंकि ये इन लड़कियों को जब से देखा है हम्म, और जब से उनका हाथ थमा है, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ यू नो हम्म, इंस्पिरेशन टू टेक इंस्पिरेशन, हाँ। some path, give them some path, so हम्म, at least they can stand up on their feet and they can become something. And that's the yes, it is financially difficult to sustain this journey on हम्म। its own. So, yes, I have to support it, but I'm trying as much as I can do. I'm doing it. आई थिंक अरुण द्विवेदी भाई का एक अच्छा कमेंट आया है कि भाई एएफएफ में लेडीज चाहिए 25% लेडीज। आई थिंक जो नया एएफएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होता है तो वी माइट सी फीमेल रिप्रेजेंटेशन आल्सो इन दी, यू कैन से, एएफएफ गवर्निंग बॉडी। अभी भी है लेकिन अभी तो थोड़ा सा कम है। तो आई थिंक देयर देयर शुड बी मोर वुमेन्स डेफिनेटली इन दी, यू कैन से, एग्जीक्यूटिव कमिटी, ताकि जो वुमेन्स फुटबॉल के रिलेटेड और जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको भाई एक वॉइस मिल सके। तो डेफिनेटली होना चाहिए। उसके अलावा मैम मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि कहानी एफसी के लिए आपका जैसे मतलब अभी भी आई थिंक आप मतलब जैसे आपने बताया था पहले कि भाई म्यूनसिपल्स गर्ल्स या बॉयज होते हैं उनको आप स्काउट करके या फिर करते हैं, तो अभी भी आप उसी प्रोसेस के थ्रू चलते हैं या फिर कोई और तरीके से आप अपनी एकेडमीज में जो इस तरह के अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं? हाँ, अभी भी हम वही रूट पे चलते हैं कि हम्म, म्यूनिसिपल स्कूल से ही हम सिलेक्ट करते हैं बच्चे। हम्म, Or when they are in fourth or fifth grade, we take some boys and girls and then we train them. हम्म, But we are now more focused for girls. But this year we'll also take some of the boys हम्म, in this journey and then just train them. हम्म। So, like every 5 years, we do another round of it. ओके। एंड ये किस तरह से मतलब इनका ट्रेनिंग रूटीन किस तरह से रहता है कि वीक में कितने मतलब एवरीडे 1 घंटा किस तरह से रहता है? So if they are very young, then we हम्म, try to do it 3 times a week. So what we ओ, do is we pick them from their school. हम्म, Uh, with the we provide the transportation, pick them from the school, bring them to the ground. हम्म, Then we also give them the kit हम्म, and everything. So they हम्म, and then coaching starts. They finish the coaching and everything. Then हम्म, we provide them with the snacks, हम्म, some nutritious parts. So at हम्म, least they don't, there is no growth or हाँ, retardation or anything or malnutrition. हम्म, And then we drop them back to the school. So then they go home. And so if they are young, we try to do it 3 times a week. हम्म, And if they are old enough, then we try to do it. And also during, like, towards the tournament, we try to हम्म, do it every day before, हम्म, like 1 month before the tournament, or depending on what kind of tournament is that. हम्म। So we do the training accordingly, 6 days or 3 days a week. एंड हाउ इज योर रूटीन? मतलब आप आई थिंक अभी भी आप प्रैक्टिशनरी आप मतलब डॉक्टर कर ही रही है। तो किस तरह से आपका रूटीन रहता है मतलब वो उसमें और इसमें एक कहानी एकेडमी को मतलब पूरा मैनेजमेंट करने में? Yes, my practice is still going on. So, like in the morning, I work from 10:30 to 2. I have हम्म, my consultations, हम्म, and also I do the training of our doctors academy. So हम्म, that also I take 1 hour. So around three हम्म, o'clock, I finish my work, हम्म, and then I do whatever work is required for the kahani. I हम्म, try to do finish that part in the evening. हम्म, But now we are kind of we are doing it for so many years, and I have my all the um, same staff. So स्टाफ, हम्म, now we know what how they are working. So it's kind of day to day routine is quite easy. हम्म। एंड उसके अलावा मैं ये डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि व्हाट्स द विजन फॉर द कहानी एकेडमी आगे आने वाले सालों में, मतलब किस विजन के साथ आप आगे बढ़ रही है? Vision. So yes, this was one of our reason to take the,
participate in the Indian Women's League. That was one of the reason. Also, another reason is to participate in the Youth League. So that is, we are almost there. IWL, we have already participated, but we also used to do the street soccer league for Ahmedabad. So I would like to do that, for even if I can do it at the Gujarat level. That will be one of the focus, I mean, future project that we will want to do it. As well as I want to make Indian selectors to find the talent from Gujarat year after year. They should, I want to put Gujarat on that radar screen, ki Indian selectors keep the thing in the mind that no, Gujarat के players को देखना ही है हमें, कहीं Exactly. मिस नहीं हो जाए. So I want to create that part, and that can only happen if we do the development of the football at the grassroots level across the Gujarat. So that's my, मुझे छप्पा छप्पा छान मारना है छान फुटबॉल. एग्जैक्टली उसके अलावा आप किस तरह से गुजरात स्टेट एफए का रोल देखती है? मतलब आई थिंक मेरे मतलब आपका जो सपना है वो तो है, लेकिन हम सबको भी पता है कि स्टेट एफएस के रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है अगर किसी भी स्टेट में फुटबॉल को ग्रो करना है. तो हाउ डू यू सी दैट, मतलब कि किस तरह से अभी मतलब आप उसको देख रही है? See, as I said initially, I faced too many hurdles in terms of like selection, because there was quota for the districts, and getting approval or getting certification for the whatever it is. But now the scene has changed quite a bit. Now it's easier to get across the message, or it's if you ask the state association, they also accept your suggestions and they try to implement it up to whatever is at state level. They try to implement. They also encourage us to do whatever we want to do. So yes, it is happening. It's not that difficult anymore. And also, I hope that the state association helps me this time to get the reimbursement from AIF for this IWL. As a host, we should not pay so much price to play in IWL. I hope the state association helps me out. लेट्स मैं भी ट्राई करूंगा जरूर थोड़ी सी एएफएफ में. आई थिंक इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली मिलना चाहिए. भले ही मतलब होस्ट है तो वो तो गुजरात स्टेट एफए होस्ट है, कोई क्लब तो होस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसको मतलब उसके भी तो आई थिंक जो मतलब चैलेंजेस है उसको आपको फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट देना पड़ेगा. सिर्फ आप मतलब एक डायरेक्शन में सोचेंगे तो वो तो नहीं होगा. तो डेफिनेटली वो आपकी बात सही है कि एएफएफ से वो मिलना चाहिए. उसके अलावा आई थिंक पिछले 2 साल में आई थिंक स्टेट एफए, अगर गुजरात स्टेट एफए की बात करें पर्टिकुलरली, तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव दिखा है कि रेगुलरली थोड़े से लीग्स में भी हुए हैं. जिस तरह से मतलब मेंस की भी लीग करवा रहे हैं वो सारी चीजें, तो धीरे धीरे उसमें भी चेंज आ रहा है. तो लेट्स होप कि सही डायरेक्शन में जाए. एंड अभी आई थिंक एक अहमदाबाद में भी 1-2 नई एकेडमीज भी खुली है, तो वो भी एक अच्छी साइंस है कि धीरे धीरे एकेडमीज भी खुल रही है गुजरात में भी. तो वो भी है. लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब इंडियन फुटबॉल में जैसे वुमेन्स को भी 2-3 वुमेन्स प्लेयर हमारी इंडियन नेशनल टीम की भी फॉरेन लीग्स में खेलती है यूरोप में. तो और एएफएफ का भी अभी रिसेंट डिसीजन आया है कि भाई कोई भी प्लेयर अगर किसी भी छोटी भी एकेडमी में अगर खेला है तो उसको कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा अगर कोई बड़ा क्लब उसको साइन करता है, तो चाहे भले ही वो एएफएफ की लीग्स में खेला हो ना खेला हो क्लब या एकेडमी. तो इस तरह के डिसीजन आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है. एंड आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो प्लेयर्स है आपकी टीम के जितने भी, उसमें से आपको मतलब आपने जो देखा हो उसका फेवरेट मैच आपको कौन सा लगा है कि भाई हाँ हमारी गर्ल्स ने भाई कर दिया, वो उस तरह का मोमेंट आपके लिए कौन सा था? मतलब जहाँ पे आप एकदम क्या बोलते हैं वो उछल जाते हैं कि हाँ यस वो वाला. क्योंकि फुटबॉल में आप हमको पता है कि इमोशन ज्यादा मतलब वो हावी हो जाता है.
तो उस तरह का मोमेंट आपको कौन से मैच से, जब आपकी गर्ल्स वुमेन्स सॉरी मेंस किसी ने भी मतलब कोई भी लीग में परफॉर्मेंस दिया हो कि आपके लिए यादगार यादगार टूर्नामेंट हो कि हाँ भाई मजा आ गया, मतलब वो वाला मोमेंट? Uh, to tell you the truth, I really get very nervous when my team is playing. And I somehow have that jinx that if I go and watch the match, we'll हाँ lose. So I used to avoid it. हाँ But this time, I was there and watching the matches most of the time. But I still remember there was one match we played for Syntex Cup, and that was the under 15. And this goal was scored by one of the boy, and the way go, ball was spin, I could still remember that spin across. So yes, that's one of the match I do remember very. लास्ट योर थॉट्स, अगर आप कुछ आप अपने हिसाब से कुछ बोलना चाहते हैं, आप कोई मैसेज देना चाहती है तो आप दे सकती है। uh, Message to whom? That also. नहीं नहीं, So इंडियन फुटबॉल फैंस जो भी मतलब देख रहे हैं। I'll say कि please watch it, especially go and watch it live, your own teams, because they really need your support. सपोर्ट। Definitely they need your support. And second thing I would say is that to everyone, keep playing. It is really very, very good, not just for your physical health, but also mental health, and also it helps you in all the different aspects of your life, because it teaches you how to जीत कैसे डाइजेस्ट करनी है, और एंड हार को और कैसे हाँ फेस करना है, करना है। जो रेगुलर लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सो प्लीज play something, definitely, and also support your own local teams as much as possible. पॉसिबल, एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इंडियंस फुटबॉल फैंस चेंजेस तो सारे काफी सारे देखना चाहते हैं, लेकिन हम उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर पाते क्लब्स को कि जहाँ पे उनको भी मतलब वो सस्टेनेबल होने का मौका मिले। आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी आप लोकल क्लब्स है, प्लीज उनके मैचेस वहां पे जाके देखिए, और आप उनकी मर्चेंटाइज खरीदिए। इस तरह की सपोर्ट आप कर सकते हैं, भले ही आप तो आई थिंक उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है मेरे हिसाब से, कि आप जो लोकली जो जितने भी एकेडमीज क्लब्स मतलब इंडिया में है, तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग, एंड आई थिंक इट्स अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी कि मतलब इस तरह के जो बच्चे हैं कि जिनको मतलब फुटबॉल फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको यहाँ पे स्काउट करके और उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना, आई थिंक दैट्स द कमेंडेबल जॉब। एंड आई थिंक इंडिया में और पर्टिकुलरली जैसे मैंने बोला कि गुजरात में इस तरह का क्लब या एकेडमी रन करना, आई थिंक दैट्स द सैल्यूट। मतलब एक एक करेज चाहिए, और एक काफी ज्यादा मतलब उसमें आई थिंक चैलेंजेस भी है, और हम काफी सारे चैलेंजेस की बात भी की। एंड डेफिनेटली मैम, आई थिंक आगे भी हम आपसे जरूर बात करेंगे, एंड कहानी एफसी को डेफिनेटली चाहेंगे कि इसी तरह से एक अच्छे टैलेंट्स इंडियन फुटबॉल में देते रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मैम। Thank you so much, QJS Harry. Good एंड to. थैंक हाँ Sorry. हाँ, बोले बोले। And thank you so much for giving us this platform. And please, please, please watch football and support your local players. थैंक यू वेरी मच गाइस, जो भी हमारे साथ जुड़े, और जो भी इसके बाद जब लाइव खत्म होगा उसके बाद भी जो भी देखेगा, प्लीज गाइस सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए। एंड कीप सपोर्टिंग कहानी एफसी ऑल्सो भाई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब पे सभी जगह पे है ट्विटर हैंडल, और जरूर कहानी एफसी को आप चेकआउट कीजिए, इंडियन वुमेन्स लीग में खेल रही है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। That's football. लेट्स फुटबॉल, यस। Yes.